Assalamu alaikum. Welcome to the series of lectures brought to you by LOGARITHM, which is a project of RBF. The topic that we have selected for you today is exponential and logarithmic functions, which is a subtopic of A-level Maths P3 section. इसके अंदर हम लोगों ने जब डिवीजन रखा है, so it covers a basic review of SURDS, indices and their properties. We'll just skip that part because you can cover it and you can go through those lectures from your mathematics section, O-level maths at olevel.com, और SURDS and indices के टॉपिक से आप उसको रिव्यू कर सकते हैं from the website. What we are going to cover today is this part, exponential and logarithmic function, where we will encounter the laws of logarithm. We'll deal with the types of problems related to them, application and some special cases. Before proceeding further, let me remind you it's just a brief overview of the course. हम लोग डेप्थ में इसको कवर करेंगे at this institute, O-level in Kochi. So let's begin the topic. सबसे पहले, what is exponential function? Any function of the form a into b to the power x is called an exponential function. किसी भी फंक्शन में जब आपके पास वेरिएबल जो है वो पावर हो जाए, that becomes an exponential function. इसी के बरक्स जो आपने देखा था वो क्वाड्रेटिक था. The quadratic had x square, जहाँ पावर कांस्टेंट थी, which was varying, the base was varying. Exponential functions के अंदर कौन वेरी करता है? The power is varying. The bases are constant, the coefficient is constant. Quadratic इसका दूसरा केस आप कह सकते हैं. तो exponential functions हमारे पास वो functions हैं where the variable is the power. तो इनका जनरल ग्राफ दो तरह का होता है. Either you face these type of graphs, या फिर you have another one जो कि they are called negative exponentials, where the variable has a negative sign, which you can further see in the document at olevel.com, और उनका ग्राफ इस तरह से होता है. So exponential function किस तरह से होते हैं? They are either rapidly increasing or very rapidly decreasing. ऐसा क्यों होता है? If you have a function, for example, 2 to the power x, you have a function 2 raised to the power x. और अगर इस फंक्शन को हम लोग प्लॉट करें, if you plot this function, this function y is equal to 2 raised to the power x, जैसे मैंने कहा, the variable is the power. इस फंक्शन की प्लॉटिंग स्टार्ट होगी first of all with x is equal to 0. At x is equal to 0, any number raised to the power 0 becomes 1. Suppose this is 1. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक पॉइंट आपके पास आ गया 1. At x is equal to 1, you have y is equal to 2. इसी तरह से at x is equal to 3, 4 और आप पावर जस्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं. What would happen? That this graph would look something like this. x थोड़ा सा भी आगे जाना शुरू होगा, the value of y will shoot up very rapidly. That is 2 to the power 6 आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू देगा, 2 power 7 128. इसी तरह से आपके पास 512 and so on so forth. तो बहुत तेजी से ग्राफ शूट करना शुरू होगा. Important point to note is this point. Every exponential function has a crossing at y is equal to 1. जब x 0 होता है तो फिर y is equal to 1 पे हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कट करता है, प्रोवाइडेड उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट अटैच ना हो. If there is a constant value as well, तो फिर that becomes y is equal to k into 1. यानी कि if we have something written like this, instead of y is equal to 2, we have y is equal to 3 multiplied by 2. So the exponential graph will cut it 3 into 1, यानी y is equal to 3. तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की प्लॉटिंग में हमें ध्यान में क्या रखना है? It always rapidly shoots up. लेकिन what about the other way? तब क्या होता है? If it becomes negative, the power becomes negative. तो x to the power -1 means 1 upon 2. 1 upon 2 का मतलब क्या है? 0.5. तो -1 पे you have over here, the graph is coming over here. इसी तरह से अगर आप इसकी वैल्यूज और नेगेटिव डायरेक्शन में लेते जाएं, what will happen? Theoretically, it will approach negative infinity, x की वैल्यू, लेकिन the value of y will never become 0. Theoretically, it is not possible. यानी जब भी किसी नंबर पे आप नेगेटिव पावर लगाते हैं, it becomes
smallest when it keeps on decreasing. लेकिन कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता. It is not possible. You can verify with your calculator. For example, 2 raised to the power minus 5. You'll get a small answer, very small answer. लेकिन आप जितना नेगेटिव की तरफ लेते जाएंगे, theoretically ये जीरो नहीं देगा. So this is the general shape. कि नेगेटिव डायरेक्शन में it becomes asymptotic, यानी बिल्कुल पैरेलल हो जाता है x एक्सिस के. And in the positive direction, it shoots up very rapidly. कि आप जरा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू देखेंगे तो आपको नजर भी नहीं आएगा ग्राफ पूरा एक साथ. और यही केस इसकी मिरर इमेज का जब आप नेगेटिव डायरेक्शंस को देखते हैं. जैसा आपने फंक्शंस के केसेस में पढ़ा है, फॉर एवरी फंक्शन यू हैव गॉट इट्स इमेज. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इमेज होती है दैट्स कॉल्ड अ लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इमेज ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. यानी अगर ये फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल का था उसको y x में हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, we'll get the logarithmic function. logarithmic function को उसका इनवर्स भी कहा जाता है और इमेज भी कहा जाता है. So this is the general shape of the graph of a logarithmic function. जैसा हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल के बारे में, that it usually crosses the y axis at 1 provided कोई constant attached ना हो. तो इसी तरह से logarithmic function x axis को क्रॉस करता है at x is equal to 1 provided there is no constant attached. और जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे we'll get asymptotic value, यानी ये ग्राफ लॉगरिथमिक ग्राफ हमारे पास y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा. जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन becomes parallel to x axis, the logarithmic graph becomes parallel to y axis. Now we start moving towards, it was just a brief introduction for you for the shapes of the graph. अब हम लोग इसमें laws of logarithm की तरफ आते हैं. So first of all, what is the meaning of the word logarithm? Logarithm means power. ठीक है, और इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं मैथ्स में, स्पेशली इन द कोर्स ऑफ P3. इसके इतने ज़्यादा यूज हैं आपके लिए कि इट्स वर्थ लर्निंग ऑल दीज लॉज, और फिर इनको यू शुड नो हाउ टू अप्लाई देम एज वेल. जो हमारे पास यहाँ 5 लॉज लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट वन इज दिस वन, log base a of 1 is equal to 0. log base a of a to the power n is equal to n. and इसी तरह से हमारे पास दूसरे रूल्स, दिस वन इज कॉल्ड the power law, this one is called product, this one is called division. So these are the laws of logarithm. इसमें हम लोगों को क्या करना है, जैसा हमने इंडिसेस में पढ़ा था, किसी भी नंबर पे जब पावर 0 होती थी तो नंबर क्या होता था 1. logarithm में जब आपके पास किसी भी बेस पर, this is called the base of the logarithm, किसी भी बेस के साथ if you attach a positive number, for example 1, for example 2, आपके पास आंसर आता है. लेकिन अगर 1 अटैच करते हैं there is a special answer always, and that is 0. यहाँ आपके पास क्या है, अगर बेस और आपके पास पावर उसकी सेम हो जाए, that is this is the base a and this is the number a, दोनों सेम है, what will happen, this will go away, it will vanish, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, and the only answer that remains is n. हम लोग इसको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे जैसे हमारे सामने भी एग्जांपल्स आती हैं. We have got this product law. logarithm में हमारे पास क्या होता है, it breaks up the product into sums. जैसा हमने इंडिसेस में पढ़ा था, उसका आप कह सकते हैं, कुछ मिला सकते हैं. When bases are same, powers are added, provided multiplication हो रही है. तो यहाँ पर बेस एक ही है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप इसको एडिशन के फॉर्म में ले जा सकते हैं. Over here again we have got ratio, और ratio can be converted into difference of two logarithms. Looking on towards some examples, जैसे ये क्वेश्चन है, that is we have logarithm of p, q and r, and we are supposed to give the answer in terms of log of p, log of q and log of r. यहाँ पर हमारे पास जो product law of logarithm है, this one, we can apply this over here. यहाँ पर कोई base नहीं लिखा हो because it is mentioned in the question that all the logarithms have base 10. It is very necessary to mention the base. अगर base नहीं mention करेंगे तो फिर वही मसला होगा कि you lose your marks. It is very important क्योंकि LOG की कोई significance नहीं है without its base. Base होना बहुत लाजमी है. So applying the product law over here, log p q r. Product law क्या कहते हैं? Product can be converted into sum of logarithms. Log of p plus log of q plus log of r. यहाँ हमारे पास एक और एग्जाम्पल है. We'll cover it over here. Logarithm to the base 10 of 100 pr to the power 5. अब
अब यहाँ पर दो तीन लॉज लॉगरिथम के जो हमने 5 देखे उनमें से अप्लाई करते हैं. नाउ लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ क्या करेगा? इस 100 को, इस p को और इस r पावर 5 को ब्रेक कर देगा. log base 10 of 100 plus log base 10 of p plus log base 10 of r power 5. अब यहाँ पर जो हमारे पास है log base 10 of 100, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? log base 10 squared, because 100 is the square of 10. और ये बिल्कुल हमारे पास मैच करता है जो हमने अभी सेम बेस और पावर का रूल देखा था. इफ द बेस एंड दिस नंबर दे आर सेम, द आंसर दैट यू आर लेफ्ट विद इज सिंपली द पावर. दैट मींस इसकी सिंप्लीफिकेशन हमें क्या देगी? 2. नथिंग एल्स. कोई लॉग नहीं बचेगा, कुछ नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज द बेस एंड दिस नंबर दे आर सेम. वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 2. ओवर हियर वी कैन नॉट सिंप्लीफाई, इट इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड. सो द नेक्स्ट टर्म वुड बी log base 10 of p. Over here हमने एक पावर लॉ देखा है. पावर लॉ क्या कहता है? Whatever power is written, इस इंडेक्स को आप इस तरह लिख सकते हैं. So this is the simplified form of your question. हम लोग इसकी भी सिंप्लीफिकेशन देखेंगे LOG10 की. Similarly, you can try this one. 2 log base 10 of 4 minus 4 log base 10 of 2. यहाँ पर आपको separated, segregated form में ले दिया गया है, and you are being asked to simplify and give it as one single term. So let's see how to do it. यानी रूल्स ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करना, उसको याद करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉगरिथम प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन योर पीएससी कोर्स एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो 2 log base 10 of 4 minus 4 log base 10 of 2. इसको आगे ले जाने के लिए what we must realize this 4 can be represented as 2 square. Over here no simplification possible. ये 2 square को जो जैसा पीछे हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था? जो भी पावर होती है it comes over here. So 2 is already written here, so it becomes 2 into 2 log base 10 of 2 minus 4 log base 10 of 2. What we do while we are working with logarithms, ये जो चीज है, either you use a calculator to solve it or you treat it as a variable. यानी इसको आखिरी वक्त तक you are not supposed to find its value, so you leave it as it is. और आप इसको कॉमन के तौर पे लेकर what you can do is find this number, that is 2 2s are 4 minus 4. What is the answer of 4 minus 4? It is 0. What you get is 0. यानी ये दोनों की दोनों टर्म्स क्या थी? They were equivalent. Logarithm is not just this much. इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कवर करनी है. We are only touching it briefly. Just a course over here. So the next thing that we are going to deal with in logarithms are some special types. जैसे मैंने अभी आपसे कहा था that we'll see कि ये LOG base 10 क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, and there is another one as well. दो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज लॉगरिथम्स हैं जो आप इनकाउंटर करेंगे अपने पेपर में, they are LN and LG. LN का मतलब है log base E, LG का मतलब है log base 10. That is to say since each and every logarithm must have a base, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा काम we use most commonly we use only 2 types of logarithm. One is logarithm to the base 10. इसको हम लोग represent करते हैं with this letter. Wherever you see LG written, it means it is actually
log base 10. The other logarithm that we most commonly use is this one, log base e. लेकिन मजे की बात है कि आपने कहीं नहीं देखी log base e लिखा हुआ. आप क्या देखेंगे इसकी alternate form even in your calculator, and that is ln. So ln means log to the base e, where e is equal to, as you know, 2.71 something. ये एक रेशनल नंबर है. So these are the two most commonly used logarithms, log base 10 and log base e. Although all logarithms हो सकते हैं, it's not as if कि आप log base 2 या log base 3 नहीं use कर सकते, but these are the most commonly used. Where we have 1 by 4 whole power 2x minus 1 is equal to 7, which we can solve using logarithms. What we do in the first step is taking logarithms on both sides, that is ln 1 by 4 2x minus 1 is equal to ln 7. ये करने के बाद क्या करना है, पावर रूल अप्लाई करके what we do, we bring this power over here, we bring this power over here, so it becomes 2x minus 1 whole bracket, because it is being multiplied with this ln. आप इसको 1 by 4 लिख सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. there are many methods. इसके अलावा भी एक दो और मेथड है जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. we'll deal with them later at the institute. What we do, we bring this thing over here in the denominator, algebraic rules हैं, यहाँ multiply हो रहा है, over there वो जाके divide होगा, and we'll be left with only 2x minus 1 is equal to ln 7 upon ln 0.25. इसको solve करके calculator से you can get the answer. यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है. The mistake that students commonly make is this one. वो समझते हैं ln और ln दोनों हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें ln 7 minus ln 0.25 कर सकते हैं. They think that this is similar, somewhat similar to the rule of subtraction जो logarithm में है. Try and never to make this mistake, क्योंकि divide करना ln से, ये किसी भी logarithm से, is entirely different from this thing, जहाँ ratio of two numbers दिया गया था, उस ratio पे log लगा. यहाँ दो logarithms का ratio है. There is a huge difference between this concept and this one. ये common mistake है जो students होती है logarithm के ratios में. The second application of logarithms, although similar, लेकिन एक छोटा सा concept आता है that we are going to deal with is for solution of inequalities. जब आप AP या GP arithmetic progression और geometric progression की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, mostly geometric progression, तो उसमें आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं where you need to apply logarithms to solve them. Over here we have 0.4 to the power x is less than 0.0004. काम वही करना है, applying ln on both sides, you will get this. और फिर आपके पास 0.4 का logarithm नेगेटिव है, इसी तरह से 0.004 का logarithm नेगेटिव है. Log of any number less than 1 is negative, log of any number greater than 1 is positive, and log of 1 is always 0. लेकिन मसला यहाँ तक नहीं है. The problem comes over here. When you take this number and try to divide it, you have to keep this in mind that this number is negative. यानी जब भी logarithm ले किसी नंबर को और inequality को solve कर रहे हो, always keep this in mind कि आप divide जिस नंबर से करें, is that number positive or negative. चूँकि ये negative है, this sign will change and this will be your answer. कभी भी mistake ये वाली करनी, जब भी inequality solve करना बस ये ध्यान में रखना है, whether your inequality is containing a negative log or not. और यहाँ हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, this one. raised to the power 1 minus 3x is greater than equal to 10. काम वही करना है, we apply logarithm on both sides. इधर का log जो आएगा that would be greater than 1 because it would be positive. Reason being this is a number which is greater than 1. लेकिन ये जो left hand side is 0.8, it will give you again a negative answer. तो जब आप डिवाइड कर रहे होंगे, you must flip the sign. ये greater than equal to, it must become less than equal to. The last application is in power law relation graphs. ये होता क्या है? ग्राफ प्लॉटिंग में एक केस ऐसा आता है when you have an exponential type of relationship. यानी कोई चीज़ बढ़ रही है तो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, कोई चीज़ घट रही है या कम हो रही है तो बहुत तेजी से.
so that exponential increase or exponential rise. Similarly, exponential decrease and exponential decrement is represented using that law, the one written over there, p is equal to a into b to the power t. ये हमारे पास क्या है? p हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल, b हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ओवर हियर यहाँ पर t इज एक्टिंग एज एन एक्सपोनेंट. तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है. प्रॉब्लम इज वी डोंट नो द कांस्टेंट्स a and b, so we use the technique of logarithm to solve this scenario. ये हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा गिवन है, हम लोग देख सकते हैं as t increases, p is increasing, but the increase in p is almost too much sudden. यहाँ आप देख सकते हैं 0 पे 3.89, 10 पे 5.3 nominal, 7.3, 7.1, 9.5 no problem, यहाँ 12 तक भी सही, and then ये अच्छा खासा इंक्रीज होना शुरू होता है when you plot it on a graph paper. So what we do, we take ln of p, we take ln on right hand side, that is ln of a b to the power t. ln a b to the power t gives us ध्यान में ये रखना है this a and b, these are constants. Where we can again apply the product rule to break it down into ln a plus ln b raised to the power t, and this t can come over here. So what we did was taking the log of p. Again, ln लेना जरूरी नहीं है, you can take lg, that is log base to the power 10. log base 10 ले सकते हैं. So moving further, when we plot the value of ln p against t, क्या हुआ? लोगरिथम ने हमारे लिए काम आसान कर दिया. जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, that has turned into a linear relationship if you plot it on graph paper. ये लीनियर लाइन की इक्वेशन निकालना, again we have different methods, you can refer to oadable.com, वहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में और मैथ्स में आपको मिल सकता है डिफरेंट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ a straight line. So once you find the equation of this straight line, what are the characteristics? आपके पास there is one y-intercept and the gradient of the line. The equation is mentioned here, y is equal to 0.0295x plus 1.375, that is इसका y-intercept है 1.37 और इसका gradient है 0.029. इन दो वैल्यूज की मदद से how are you going to find those two constants, that is a and b? तो हम लोगों ने जो ln वाला काम किया था, that is we broke down the relationship, जो एक assumed relationship थी, हमें कुछ नहीं पता था उसके बारे में, यानी t की वैल्यू b की वैल्यू a की वैल्यू कुछ नहीं पता था. हमने जब ब्रेकअप किया उसका, अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं y is equal to mx plus c के साथ, once we compare it with y is equal to mx plus c, तो हमें नजर आता है this is our y, this t is our x, because t is a variable here, और x के साथ क्या चीज जुड़ी होती है? m. So our m, that is the gradient, is ln b. And finally the y-intercept, which was represented by the letter c over here, is ln a. आपके पास दो constants हैं, gradient this ln b and y-intercept ln a. So you can find these values, take the inverse, that is e to the power, and you can find the exact relationship. That means that graph, that data, the raw data which was provided to you is related by this form of equation. P is equal to 3.958 into 1.0299 exponent t. And this is how you can solve the graphs, the raw data which is provided to you, which show a resemblance towards exponential form. किसी भी exponential relationship को show करते हैं, उस behavior को. So this is how you solve for it. You take the natural logs or log base 10 और इस तरह से आप उसको cover करते हैं. And this wraps up our course for exponential and logarithmic functions. What we covered today was the basic graph, ठीक है? And furthermore we did was application of logarithms, solving an equation, inequalities, and power law relationships. What we have to keep in mind that this topic is not just this much.
इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ मौजूद है. What we did over here was just a brief course for you. इसको हम फर्दर डेप्थ में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विद पेपर क्वेश्चंस जो मुश्किल होते हैं, कुछ खास ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, विल कवर देम एट द इंस्टीट्यूट with in Gulshan Iqbal, and this wraps up the topic.